Sessions first. So very good morning to you all. So today we will discuss the important questions from the paper one. That will be the miscellaneous. So here are the questions from the ICT. That the concept of connect intelligence. जो connect intelligence का जो concept है, that basically derived from virtual reality, fuzzy logic, Bluetooth technology, or the value-added networks. Everyone. The concept of connect intelligence is derived from. Everyone participate in the questions. ठीक है, आप लोग सभी लोग आंसर दें. ठीक है, तब जाकर आप. So right answer it is D, value added networks. ठीक है, because अगर आप देखेंगे यहाँ पर what it is, so value added networks is a value added network is a private hosted service that provides the companies with a secure way to send and the share data with its counterparties. ठीक है, सो ये VR जो है एक एग्जाम्पल है. ठीक है, VR इज द एग्जाम्पल ऑफ द, आप कह सकते हो दैट इज बेसिकली एज एन इंटेलिजेंस VR वर्चुअल रियलिटी. बट हेयर द कंसेप्ट विच इज डिराइव्ड, मतलब इसकी इवॉल्व पूछ रहा है कि वेयर फ्रॉम इट इवॉल्व. ठीक है, सो दैट बेसिकली VR तो आज का ट्रेंड है. ठीक है, but that intelligence is basically asking it is derived from where. So that is WAN, right? That is value added network, right? Basically एक hosted service होता है, private hosted service है, जहां पर आपको एक सिक्योर तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करना और इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है. ठीक है, so that is a basically kind of the network which is also a कनेक्ट इंटेलिजेंस कंसेप्ट. ठीक है, सो ये जो डिराइव है ये यहाँ से लिया गया है, वैल्यू एडेड नेटवर्क से, ध्यान में रखेंगे. ठीक है, वी आर कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्ट इंटेलिजेंस बट इट हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम द वैन, राइट? दैट इज वैल्यू एडेड नेटवर्क. चलिए, क्वेश्चंस है, मैथ्स का क्वेश्चंस है. The average of the four consecutive even number is 27. The largest of this number is. ठीक है, very important. Without options, there is no need of the options here. If you know the concept of this question, so you can answer it. ठीक है, four consecutive even number किसे बोलते हैं, right? Like for example, 2, 4, 6, 8. This is four consecutive even number. ठीक है, like 12, 14, 16, 18. This is four consecutive even number, right? 20, 22, 24, 26. This is what called four consecutive even number. Means चार even number लगातार हो, उसको हम four consecutive even number बोलते हैं. ठीक है, even number आपको पता है that the numbers which can be divided by the two. Okay, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछ रहा है इफ दैट बेसिकली एवरेज. एवरेज क्या है? एवरेज क्या होता है? एज यू नो दैट व्हाट इट इज एवरेज, दैट sum of all the observations divided by number of the observations, right? That is what it called average. So average of four consecutive even number is given here, that is 27. You have to find out the largest of these numbers are what. So everyone, what could be the answer of these questions? If you have understood well, so you do not know that what are the four consecutive even numbers. So let's suppose that the first consecutive number, पहली जो consecutive number है उसको आप क्या मान लीजिए? X, right?
सेकेंड कंजिक्यूटिव इवन नंबर जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर, यहाँ पे इवन है। ओके, दैट इज व्हाट विल बी x+2, राइट। थर्ड कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, दैट इज x+4, एंड फोर्थ कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, दैट इज x+6। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? Can we suppose to take here that four consecutive even number like this, x+2, x+4, x+6, everyone? Till here it's clear? Everyone, if it's clear then say yes till here, ठीक है? अब now the average is given. So average क्या है? What would be the average? That is, you would find it here, the average, that the sum of all the observations. So let's sum up x+2 plus x+4 plus x+6, right? And divided by, that will be 4. And what the number is given, that average is 27. Okay, this is what the equations are. Now after it, you please solve it, these equations. So x, 2x, 3x, 4x. This is 4x plus 6, 4, 10 and 12. Okay, divided by 4 and 27. So now do the cross multiplications. So after cross multiplications, what it will be? Everyone, अब तक तो आंसर दे दीजिए everyone. We had gone for the equation, so now you have to answer it, that what it will be. ठीक है? 4x plus 12 is equal to 27 into 4. वो how much? 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 108. Of 4x, that is plus minus 12 will go into the RHS, that it will become the minus. So it will be 96. So S is equal to how much? That is 24. Okay. यहाँ तक clear है? Everyone? Till here it's clear? Okay. Now x is equal to 24. So you can find out by keeping the value of the x. So that is 24. 24 plus 2, that is 26. And 24 plus 8. 4, 28, and that is 30. So this is what the consecutive number it is. ठीक है? If you would add it और average निकालेंगे तो इसका क्या आएगा? 27 आ जाएगा average. You can check it, you can cross check it that. So what are the four consecutive numbers? That is 24, 26, 28 and 30. Okay? Everyone clear? सभी लोग clear है ये questions? If it's clear this question, then say why. Right, I would be asking individually as well. सभी को मैं individually भी पूछूंगा. If it's clear, then please ask it. ठीक है? अगर कोई कहीं पे डाउट भी है तो प्लीज पूछिए. धनलक्ष्मी इट्स क्लियर, चैत्रा इज क्लियर, प्रीति भी बोले यस इट्स क्लियर. व्हाट अबाउट द अदर्स, क्लियर है? चलिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको टफ लग रहा था कि ये कैसे बनेगा, बट इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो आपको इसी तरीके से क्या करने हैं, बनाने हैं. ठीक है? अच्छा. अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे, ये यहाँ पे ऑड नंबर कर दे. ठीक है? सो ऑड नंबर जब आप लेंगे तो क्या सपोज करेंगे यहाँ पे एवरीवन? इफ द क्वेश्चन इज दैट ऑड, सो हाउ वुड यू सपोज इट हियर? ऑड जो है तब क्या सपोज करेंगे यहाँ पे? एक्स प्लस क्या होगा? व्हाट यू वुड सपोज इट इफ इट्स द फोर कंजिक्यूटिव odd number? Then what you would suppose at the here? X plus 1, exactly. Then it is, आप ऐसे कर लीजिए, that is आप, yes, x plus 3 again, x plus 5 again, yes. So like this you have to
मेक इट, राइट? सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप x की वैल्यू सपोज भी करते हो, लाइक x की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, x that is 7, आप सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव सपोज 7, दैट इज अगेन हियर, ये सॉरी आपने वन वन सपोज किया या टू सपोज किया, ठीक है, so 2 plus 1 that is with 3, 2 plus 3 5, 2 plus 5 7, so in this way you have to suppose it and you have to arrange it, ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसी तरीके से ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 27, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, एंड फिर आपको कंजिक्यूटिव ऑड नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। शैलेंद्र, इट्स फ्रॉम द मैथमेटिक्स एंड द रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, now reasoning is here. In an entire certain code, FHQK means girl, how will women be written in the same code? बताइए, चलो ऑप्शंस। एवरीवन, yes. So what you had answered, that is everyone is answering C, majority. तो देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत इजी है, यू हैड टू बस कि आपको ये सीक्वेंस आपको देखना है, ठीक है, यू हैव टू लुक ऑन दिस सीक्वेंस दैट, और अगर आप इस तरीके से भी लिखें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, FHQKGIRL। नाउ व्हाट इट इज हियर, राइट? अगर आप देखेंगे EFG, दैट इज हियर +1, H, that I comes after H, that is only +1, it is encouraging +1 +1, right? In the same way that how the woman will be written as. So do this +1 up, that is you have to write the next letter of the W, right? So WXOP, right? That is MNEFNO. So XPNFO will be the answer, right? Is it clear to everyone how you are saying that it is, that is +1, no? Is क्यों -1 कहाँ हो रहा है? This is not the -1, this is +1, right? That you are going ahead. It's clear? Sugasni, it's clear to you? And as well as Chatra, it's clear? Chaliye. Yes. The FHQ means girl, EFG, right? That is G comes after, G comes after F. ठीक है, वैसे ही आपको +1 करना है, so options will be the C1, right? चलिए, okay. Next. At what time the between 4 and 5 o'clock will the hands of a watch point in the opposite directions? Everyone, अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कंसेप्ट है इसमें, सो दिस इज द 4, ये 4 बजा है,
और ये 5 बजा है, ठीक है, राइट। एंड in between, at what time in between of the 4 to 5 will the hands of a watch point in the opposite directions, ठीक है, so at what point it will be in the opposite directions, ये क्या टाइम होगा, that will be in the opposite directions everyone. तो इस तरीके के क्वेश्चंस अभी फिलहाल जो है, मैं आपको एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शंस भी दे देता हूँ, so that you can be with this clarity. Everyone. Yes. So what you had all answered, only two answers, the which I have got it here. That is C, but the right answer of this question is what? That is D, right? So how it will be, how you are going to solve all this kind of the questions? एक फॉर्मूला है, इसका शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. So what will be the right answer of this questions? That is, आपको जब भी अपोजिट डायरेक्शंस का इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया और दो टाइम दिया हुआ है 4 o'clock एंड 5 o'clock, so between 4 o'clock and 5 o'clock, what will be the exact time, during that time the hands of a watch point will be in the opposite directions. So this kind of the opposite directions वाला questions है, इसकी solutions कैसे करते हैं? Now see, चलिए ऑप्शंस रहने दीजिए, ठीक है, we'll see here. Now see, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज फॉर्मूला. सो फॉर्मूला इट इज 60 into t1, this is the t1, this is the t2, time 2 time 1, okay. 60 into t1 plus minus 2 into 180. Why it is 180? Because it is in the opposite direction. So इस तरीके से जब होगा, right, so it is making the degree that is 180 degrees, so that's why it is 280 into 180, that is 360 divided by 11. This is the formula, right? This is the formula that you have to keep the values of t1 only. सिर्फ आपको t1 का वैल्यू रखना है बस, और कुछ नहीं करना. So what will be the answer of these questions? Now, according to the, as per this formula, please answer these questions. So plus minus, it is that if it is negative value, you have to cross it, you have to ignore it. You have to take only the positive one value, right? You have to ignore the negative one value. So how it would be? 60 into 4 plus minus, that is 360 upon 11. So now what will be 240 plus minus 360 upon 11, okay. Now next अगर देखें यहाँ पे, so 1 it is 240 minus 360 upon 11, and the second side it is 240 plus 360 upon 11, right? So this is the negative value, so we will cross it, we will ignore it, and this value we will take it. So if you would add it, how much it will be? That is 600, right? Divided by 11. So now divide it 11, that is 600. So that is 5550, and then again that is 44, again that is 6. So that is what it's here, that 54 minutes, it is 54 minutes and this is 6 seconds. Okay, so you can write it that like the pass for the 54, 6 upon the 11, right?
So 54 6/11 is the correct answers, right? ये आपका क्या है, ये लिखना होगा इस तरीके से. Okay, so this is what it's about. Is it clear? चलिए, कितने लोगों को क्लियर हो गया? We will repeat this concepts. ठीक है. How many of you are clear for from this formula and you can do the questions? चलिए, so please इसको फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. राइट. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज देयर. अगर आप देखेंगे ध्यान से, इट इज हेयर द अपोजिट डायरेक्शन में आपसे पूछा गया है. ठीक है. दिस इज द T1 एंड दिस द टाइमिंग इज T2. राइट. सो डायग्राम अगर बनाएंगे तो डायग्राम इट इज लाइक दिस हेयर, दैट इज 4 to 5. सो ये जो है, दैट at what time this the directions of the hands will be done the opposite directions, right? You have to find it out the time. So it means that, so पास 4 ही होगा, राइट? 4 बजने के बाद ही कोई ऐसा समय आएगा जहां पर जो घड़ी की जो सुई है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट? वो किस टाइम पे होगी, यानी 4 बजकर कुछ मिनट आएगा, राइट? आप पास फोर्स, देयर विल बी सम मिनट्स. सो व्हाट विल बी दैट मिनट्स, यू हैव टू फाइंड आउट. So the concept formula, it is that 60 into T1 plus 2 into 180 upon 11. So now keeping the value of the T1 के जगह पे आप value put कर दीजिए. It's very easy. So T1 की value क्या है? That is 4, right? So that is 4 plus minus 2 into 180 upon 11. Now do the equation. आप equation को solve कर लीजिए. So multiply it, that is 240 plus minus, and that is 360 divided by 11. So this is what the equations. So when you will add it and subtract it, so two values would become. So one, you have to ignore it if it's the negative value. Only the positive side value you have to take it, right? So 240 minus 360, it is the negative value. So we will add it 240 plus 360. When you will add it, it will be 500 by 11, right? So when you will divide it, the 11,500, it will be like this. ठीक है, इस तरीके से आपको आएगा इक्वेशन. सो दैट इज व्हाट इट्स हियर द मिनट्स. ये क्या है? मिनट्स है, राइट? सो व्हाट हियर द past 4 and this is the minutes which is it given 54 6/11. It's clear? Then Lakshmi, now it's clear to you. So this is the formula that you have to keep the values of the T1 only. That's all. Okay. This is the new concept which you have to keep in mind, right? It's very important. Chale. Now, the question is here, A is the father of B and C is the sister of A. D is the grandson of C. How is D related to B? The blood relation questions, everyone. So blood relation questions are done from making a diagram. इस तरीके क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट है? डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इट. सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है. सो एक ट्री डायग्राम इसको बोलते हैं. ट्री डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है, राइट? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ए हम फादर बोले, ऑन साइन एंड सिंबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइन आपको इंपॉर्टेंट रखना है. दैट इज प्लस, इट इज विल बी इंडिकेटेड फॉर द मेल and the minus, it will be indicated for the female as well. Okay. And if it's the in the same generation, you have to keep the alignment in the same parallelly. आपको alignment रखना है if it is in the same generations. If the generations are changing, you have to pay attention on the bottoms and the top, right? So like for an example, A is here father. So father is male here, that is we will put the value of the sign, that is plus. So A is the father of B. B का father है. So generation is changing. So that is B, it is here. B का father है. So A will be in the top, right? So
यहाँ पे B, we do not know that B is the male or the female, so we will write only the B, ठीक है। Now the C is the sister of A, अब C क्या है, sister है, so it will be in the parallel, ठीक है, ये parallel में जाएगा, and that is what you will write the C here. It means that is C is the sister of A, okay, very good. So C is the here minus, right, that is the sister। और जब भी कपल्स की बात आएगी, सो कपल्स में आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप एरो बना देंगे, सो दिस इज इंडिकेटिंग हियर द कपल, ओके। सो नाउ, अब यहाँ पे दिस वी हैड क्लियर्ड, दिस वी हैड मेक द डायग्राम। नाउ डी इज द ग्रैंडसन ऑफ द सी, अब डी जो है दैट इज द ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन है, इस मीन्स दैट इज ऑफ सी। ये आपका एक हो गया, यहाँ पे फादर वाला एक जनरेशन आया, सो ग्रैंडसन मीन्स टू जनरेशंस, ग्रैंडसन का मतलब दो जनरेशंस। फिर आपको एक और यहाँ पे जाना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू पुट द वैल्यू, दैट इज डी। So D is the grandson. This is the also plus. This is the grandson of the C. Now, what the D is related to the B. अब यहाँ पे ये बताना है what the D is related to B. D क्या है that is related to the B. Now it means that the parallel तो नहीं है, cousins यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एक generation से यहाँ पे है। So what it would be? So neither brother, neither sisters, right? ना ही cousins में आएगा, yes. So what it will be? So options are here: uncle, nephew, cousin, brother, or grandson. So grandson नहीं आएगा, right? Because the generations are here not, right? Now you have to think it what the D is related. D का पूछा गया है, ठीक है? So yes, D भी uncle में नहीं आएंगे because the D is in the lower generations, right? So D is asking here that how the D is related to the B. So answer it is here nephew. Okay, it's clear. Everyone is clear. You have to make it the diagram as per this. ठीक है, इसी तरीके से आपको ट्री डायग्राम बनाना है and definitely you will solve this kind of questions. So you have to pay the many of the things while solving the blood relations questions. Blood relation questions में हमारा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन एंड सिंबल्स रिप्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरेशंस आपको देखना पड़ता है, जनरेशंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इफ यू वुड मेक इट प्रॉपर डायग्राम, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The main objective of the teaching at the higher education level is, yes, higher education में सबसे important हो जाता है that is developing the capacity to take decisions, ठीक है, हम पास नहीं करते, right? New information so देते ही रहते हैं रोजाना, so this is not good with the objectives. Tend to motivate the ask question during the lecture, so this is the main thing, that to develop the capacities to take decisions themselves, right? Now, which of the following is not an instructional material, everyone? Yes. Dhanlakshmi, it is the instructional material. ये instructional material है. Projector, that is OHP is very important, right? In the classes, in the lecture. So this is not, it would be transparency is not the instructional material, right? It is question, it is asking here not. So these are the overhead projector, audio cassette, these all are the instructional material. सारे क्या है? Instructional material है जहाँ पर जिसकी ये ads है. Ads for the teachers are, right? Which help the teacher to teach with this instructional materials. Okay, it's clear. So Asni Shalin, it's clear. Transparency is not the instructional material, and the rest all the projector, cassettes, printed material, these all are the instructional material. This is very simple questions. आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो इस तरीके से, इस तरीके क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस में, और आप गलत करते हो। Which of the following statement is not correct, everyone? ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो एवरीवन देखते ही, ये तो याद हो जाना चाहिए, इस तरह क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है एग्जाम में।
Yes. So A is the right one. ठीक है. That is, it is not the correct statement, and rest all are about the lecture method is correct one. Lecture methods are passive. ठीक है. It is lecture methods. The students are passive basically, क्योंकि टीचर वहां पे क्या होता है, एक्टिव होता है. टीचर लेक्चर दे रहा है तो टीचर एक्टिव है, एंड द स्टूडेंट वहां पे क्या है, पैसिव है. स्टूडेंट्स आर नॉट so much interacting with in the lecture, right? Lecture method is one way process. It can develop the knowledge, but it cannot develop the reasonings. Okay. Chale, questions. Now, important concepts about the reliability and the validity. Everyone, what the correct statements are in the research. This question is from the research. You have to know it. The reliability versus validity. Reliability versus validity. Everyone. बहुत लेट आंसर दे दे, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है. सो राइट आंसर इट इज हियर द सी. Reliability and validity are independent of each other. Means that the both of the tools here that are independent of each other. Reliabilities are also independent, right? And validity is also independent, right? They are not dependent of each other. They are independent of each other. Okay. So this both of the concepts basically used to evaluate the quality of the research. ठीक है. अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च के अंदर आपको रिलायबिलिटी टेस्ट करना होता है, वैलिडिटी टेस्ट करना होता है. ठीक है. This is very important that you have to test this reliability and the validity in your research. It brings the quality ऑफ योर स्टडीज. ठीक है. आपकी क्वालिटी, आपके स्टडीज की क्वालिटी को क्या करता है, इनहेंस करता है. ठीक है. आपके रिसर्च की परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और आपको बताता है कि आपने रिसर्च जो करी है एक कितनी क्वालिटी बेस्ड रिसर्च है. ठीक है. सो अब समझिए रिलायबिलिटी होता क्या है एंड वैलिडिटी क्या होता है. रिलायबिलिटी कहने का मतलब यह है कि एक तरीके का ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड्स है, एक ऐसा टेक्निक्स है जहां पर आप जब जितनी बार आप उसको मेजर करोगे वो सेम रिजल्ट ही देगा. दैट इज हेयर इट इज गिविंग द कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट. लाइक फॉर एग्जांपल यू हैड मेजर द वेट ऑफ ए पर्सन. आपने एक पर्सन का वेट मेजर किया, ए का वेट मेजर किया, एंड इट्स हेयर द 45 kg. अगेन again you are measuring. ठीक है. अगेन यू आर मेजरिंग दैट द वेट दैट अगेन हेयर इट इज 45 kg, राइट? फिर आप इवनिंग में मेजर कर रहे हो, that again here it is the 45 kg. You are measuring again on the next day, it is the 45 kg. It means that every time when you are measuring, right, the weight of that particular person's, that the result is the same. The consistency in the results are there. It means that the your whatever you had measured, right, that is the that brings the consistency, that there is no false data is there, that your data is accurate and qualitative. It means that consistency is there. It means the reliability is there. वहां पे क्या है, रिलायबिलिटी है, जहां पे कंसिस्टेंसी आता है रिजल्ट में. मतलब बार बार आप चेक कर रहे हो और बार बार वही रिजल्ट आ रहा है. इसका मतलब कि आपकी जो स्टडीज है, जो स्टडी को जो भी मेजर किया गया है उसकी जो वैल्यूज है वो सही है. ठीक है. दैट इज इट्स रिलायबिलिटीज. रिलायबिलिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें किस बहुत क्रॉनबैक अल्फा एंड ऑल है, उसको आगे कभी पढ़ेंगे. बट इतना जान लीजिए रिलायबिलिटी होता है जहां पर रिजल्ट्स में आपकी कंसिस्टेंसीज रहती है. ठीक है. एवरी टाइम यू मेजर्स यू गेट द सेम रिजल्ट्स. दैट इज व्हाट द रिलायबिलिटी. व्हाट इज द वैलिडिटी. वैलिडिटी क्या होती है. वैलिडिटी इज अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजर. मतलब कितना सही आ रहा है, रिजल्ट कितना सही है. व्हाट द टूल्स, whatever the tools that you have used, that is accurate or not. For an example, important it is to understand this question, so it's very important. So validity को समझिए ध्यान से. Validity is there that about the tools that you are using. Like for example, the weight machine जो आपने use किया, right, weight machine, that weight machine is giving the result accurately or not, right? The thermometer which you are measuring the temperature, the thermometer is giving the accurate result or not. This is about the tools that you are using
to measure the things that the tools is how much accurate it is giving. Like वेट मशीन आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपका 45 केजी आया, दूसरी बार 47 केजी आया, तीसरी बार आपका 48 केजी आया, फिर 44 केजी आया. सो इस तरीके से रिजल्ट नहीं दे. सो वैलिडिटी इट इज अबाउट द टूल्स दैट यू आर यूजिंग टू मेजर that how much it is accurate. That is what it's about. The accuracy of measuring the things, that is the validity, right? And the consistency in the measures results, that is the reliability. So reliability and the validity both are independent of each other. They are not dependent of each other. Okay, it's clear? Everyone? Chali. All right. So this was all about which we had learned the many of the concepts in including the mathematics and the research and many of the things. That's very important. Keep on practicing this kind of the questions after the classes, right? It will help you to quickly recognize this all kind of questions. Okay. So you cannot do the mistakes. Okay, thank you to you all. Thank you so much. We'll meet in the upcoming session. Take care and stay safe. Okay. All right. Chali.